अछि ना सर सेटा टी बुझ परले ना काहे कि ना मोनोसैकेराइड जो देछि सर डेफिनेशन ना मोनोसैकेराइड इज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed to simpler compound. So जो hydrolyzed term सेटा टी सर बुझ हां रंजित कहले हाइड्रोलाइज रो अर्थ कोन कहू सर जो monosaccharide are the simplest form of carbohydrate which cannot be hydrolyzed to simpler compound. ये जो hydrolyzed जो होची सर एटा सर कोनटा सेटा हम बुझी पानी ठीक है. ओके देखो हाइड्रोलिसिस रो मीनिंग होची कोन जे कोनसी गोटे कंपाउंड जोटा पे हमें खाउछे जो भी न्यूट्रिशन को हम खाउछे तार फर्दर डिवीजन होबा को हाइड्रोलिसिस को जिंस कोन ना जेतेबेले हमें जेतेबेले आपण देखु ग्लूकोज ता जेतेबेले आपण को जो हमें C6H12 O6 को जेतेबेले भाग करूछे हमें देखुथिले गोटे जे 36 माने एटीपी बाहरुची ता परवर्ती समय रे बाकी जो वाटर बाहरुची कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुची सेटा होची जो प्रोसेस ता देखिले ना ता ताको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहू सेटा जेमति हमें ग्लूकोज रो हैला सेमति अन्य कंपाउंड रो मध्ये सेमति ब्रेक डाउन हुए से ब्रेक डाउन प्रोसेस ता को हाइड्रोलिसिस कहते कहबा कथा होची एटा कि जेहेतु मोनोसैकेराइड ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि तार माने जे कोन आमे जेतोले किछि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करूछु तो सी ग्लूकोज आकार रे बा अदर मोनोसैकेराइड आकार रे आसिला परे ही हम देह रे सेटा यूटिलाइज हे परिबो से जेहेतु ऑलरेडी से मोनोसैकेराइड रे अछि ऑलरेडी से सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि तार फर्दर आउ किछि सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करूनी तो सेही वर्ड लिखा है कि इट इज द it is such type of component that is already in the simplest form, so no further hydrolysis is possible for that. Okay sir आप टिके जो लिपिड सर बुझ पाले सर आप टिके लिपिड ता सर टिके बुझे दन सर लिपिड रे जोटा सर हमरो डिवाइड होची ना हाइड्रोजन एटम सर सेटा टिके सर टिके ओके लिपिड रे से जो दीटा फास्ट हमें जो पार्ट डिवाइड करले जो माने सिंगल हाइड्रोजन एंड डबल हाइड्रोजन वाला सही पार्ट ता क्वेश्चन सेटा सर ठीक है हां सर सही पार्ट we'll have a recap on that and we'll continue. सर प्रणाम. हाँ नमस्कार. सर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन माने कौन सर? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कोड लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मन को आगे जो एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल सर प्रोटीन रा फंक्शन ऑफ प्रोटीन रे सेटा ओके ओके ओ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कोन पूछ हां माने हमर जो मसल हमें कॉन्ट्रैक्शंस होची ना मसल कॉन्ट्रैक्शंस होची तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हवा पई किछि आमे तो नॉर्मली भाबु छी ना केवल गोटे नर्वस इंपल्स कला आ मसल कॉन्ट्रैक्ट कला ठीक अछि नर्वस इंपल्स ता गोटे इंफॉर्मेशंस दोची गोटे एक्शन करिया पे गोटे यू कैन से ऑर्डर ता दोची ठीक अछि ना बट एंड ऑफ द डे द मसल नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट माने आमे सेठी किछि वर्क डन होची वर्क डन होआ पे किछि प्रकार माने इंटरनल किछि मैकेनिज्म्स चलची से जो प्रोसेस ता जो अछि ना जो कॉन्ट्रैक्शंस पई जो प्रोटीन का जो एनर्जी दरकार तो ताकू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कोन आगे सर आगे ओके Put a second just we'll just clear that doubt then we'll proceed to the next topic okay see रंजित कोथले एजेंसीटा कि फैटी एसिड एठी हमें कोन कहले कि नॉर्मली हमें जतोडे लिपिड्स कथा देखु छी तो द मेजर क्लासिफिकेशन इज हियर द सिंपल लिपिड्स कंपाउंड लिपिड्स एंड द डिराइव्ड लिपिड्स अपार्ट फ्रॉम दैट आउ गोटे कोन हमें देखले इनिशियली जब हमें कहथले कि माने जो फैटी एसिड्स गुडा को होची तो नॉट अबाउट लिपिड्स अबाउट द फैटी एसिड्स को हमें कोन करू छु सैचुरेटेड फैटी एसिड आउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को केतेबेले ताको सैचुरेटेड कहिबा तार सिंपलेस्ट फॉर्म एटा सी कहिची जेतेबेले हमें दीटा हाइड्रोजन एटम को देखु ए जगह जस्ट सी ओवर हियर इफ सैचुरेटेड बा अनसैचुरेटेड केमिति डिटरमाइन हिची डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द ईच कार्बन एटम मु कहली बेसिक डिटेल तो ता भीतर को जिबानी जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग और हमको मेमोराइजेशन गोटे टाइप पिक्टोरियल मेमोराइजेशन थाए मु ई कथा कहली कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कथा जेतोला हमें देखुचे जेतोला हमें एजेंट्स कहूचे कि देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स that is attached to a single carbon atom एटा ए टाइप रो हबो कि एटा गोटे कार्बन एटम रहिबो ए कार्बन एटम साइड रे दीटा हाइड्रोजन एटम अटैच हिची
okay, 2 hydrogen atom considered to be a hydrogen atom, ठीक अछि. And other side रे dita carbon atom attach होछि like this. If the structure is माने somewhat like this, जदि ए टाइप रो हबो मु कहूनी जे एटा ही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कोछि. This is just a pictorial representation because मु भी एबे बर्तन dig down करै कि जाइनी कि organic chemistry whether it is the माने सेही टाइप रो स्ट्रक्चर or not. हमको इतकी मन रखिया को पड़िबो कि कार्बन जो सेंट्रल कार्बन एटम सहित केतेटा हाइड्रोजन एटम अटैच हिछि based on the number of hydrogen atom that is attached to the carbon atom, that will determine whether it will be a saturated or unsaturated. In case of the saturated case which we consider korju, the central carbon atom is attached to 2 hydrogen atom. Other side re 2 carbon atom, that is constant whether it is saturated or unsaturated. But जेतबेले unsaturated देखुचे सेतबेले central carbon atom सहित hydrogen will not be 2 in number, it will rather single in number. गोटे hydrogen ही atom रहिबो. The arapota side रे you will find again the same thing, there will be 2 carbon atoms. Just put a second, there was some problem with this. Here we can see in case of saturated, unsaturated, there will be saturated, there will be carbon attached to 2 hydrogen atom and 2 carbon atom. Jodi unsaturated kotha dekhiba, central carbon atom is attached to a single hydrogen and 2 carbon atom. जेहेतु सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो ए जो बॉन्ड से फॉर्मेशन करिवो रादर देन एटा गोटे डबल बॉन्ड से फॉर्मेशन से जिनसटा से लिखा हिच. ठीक अछि. बेस्ड ऑन दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बेसी भितर को जिबानी बिकॉज़ इट इज नॉट आवर प्रोरोगेटिव टू गो डीप इनटू द थिंग्स बिकॉज़ आमर अंडरस्टैंडिंग से केवल नॉर्मल क्लासिफिकेशंस वी हैव टू रिमेंबर. ठीक अछि. जो जिनसरा मु डिटेल कोन रखिया अछि जेमति बर्तन फैट विषय पढिबा तो फैट और डाइजेशंस देखिया, फैट और अब्जॉर्प्शंस देखिया, फैट और मेटाबॉलिज्म्स देखिया, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड. ठीक अछि. रंजित ए पर्टिकुलर जिनसटा कोन बुझिया पे कोतले ना आउ कोन डाउट थी? yes ना सर एति सर हमर मेजरली सर दुईटा हाइड्रोजन कंपाउंड रहले एटा सर हम ताको कहि परिबा जे सेटा होची सैचुरेटेड सैचुरेटेड that is saturated and if yes, so that should be the basic understanding. ठीक अछि. So let us wind up for this. आमे कोन करिबा, we'll move to the digestion part. ठीक अछि. We have already done with the digestion of the digestion, metabolism and absorption of carbohydrate and सार देइथिले. Now let us see about the protein and fat. Protein fat हमें theory complete कर देछे, तार digestion absorptions बाकी अछि. ठीक अछि. And जेतबेले देखो मु गोटे जिंस प्रथम कहिछि कि you must be aware of these facts as of now कि बर्तन जो जिंसटा हमें पढुचे. Now that topic we are going to discuss right now, it is from your chapter number 3. Okay, एति तो clarity समस्त आछि because we have already discussed about the detailed content of your syllabus like multiple times. ठीक अछि. Because what I feel, you should go by the chronology rather than what is given in the syllabus. Okay, end of the day आपण तो सब जिंस मन रखी कि एग्जाम को जिबार अछि जोटा. But if you still feel any difficulty in my approach, then you are free to express your concerns, we will modify accordingly. ठीक अछि. एबे पर्यंत आई गेस कहार किछि प्रॉब्लम नहीं, बहुत तो कम हमें जस्ट दीटा ही क्लास करिचे. So based on this, let us go to protein digestion. Okay, देखो एबे कार्बोहाइड्रेट कथा हम सरला. नाउ गो टू प्रोटीन. प्रोटीन जेमते हम कार्बोहाइड्रेट देखली, देयर आर एक्चुअली हम बॉडी रो डाइजेशन रो तीनटा मेन प्लेस थाए. गोटे होची माउथ, नेक्स्ट होची स्टमक एंड नेक्स्ट इज द your intestine. Okay, intestine to be specific, it is the small intestine. ठीक अछि. ए तीनटा जिंस रही आपनकर मेजॉरिटी ऑफ not majority, all the digestion will be completed. Large intestine रो काम कोन थाए? मोस्टली absorption and extractions. ए सब पार्ट उडा को थाए large intestine रो पार्ट. ठीक अछि. माने absorption not the nutrient absorption. माने गोटे साधारण कथा कहबा बोले गोटे सपोज मु गोटे फ्रूट गोटे खाइली. ठीक अछि. फ्रूट रो डाइजेशन हला, फ्रूट रो एनर्जी मिलिबार थिला, से एनर्जी मिलिला स्मॉल इंटेस्टाइन रो से पर्टिकुलर एनर्जी टा वर्तमान बॉडी रो पोर्टल सर्कुलेशंस भितर को माने ब्लड स्ट्रीम्स भितर को एंटर करि जिवो. करि गला परे तार जो रिमेनिंग्स गुडा को रहिला, सपोज आप फ्रूट रो जूस करछन जो रिमेनिंग पार्ट उडा रहउची, दैट इज स्टिल देयर इन माय बॉडी, सो दैट विल एंटर इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन. A large intestine रे से भितर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस हुए. व्हाट इज द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शंस? स्टिल किछि वाटर कंटेंट में भी रहि जाय पारे, स्टिल किछि माने स्मॉल न्यूट्रिएंट्स रहि जाय पारे, विटामिन्स रहि जाय पारे, किछि रफेज रहि जाय पारे. जदि तार आवश्यकता अछि फर्दर एब्जॉर्प्शंस पई, दैट विल बी डन इन योर
large intestine. Okay, it is the broad picture view जो माने non science background रो belong करछन जो माने biology suppose हम पढ़ी छे भूली भी जाय छे, just you should keep this thing in your rough picture in your mind on based on that you should approach. Okay, जिनको कहली कि तीनटा जगह रे हमर डाइजेशन हबो, गोटे माउथ, नेक्स्ट इज द स्टमक एंड नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, बेस्ड ऑन दिस देखंतु माउथ रे प्रोटीन जतबेले एंटर करे कोन हुए इन जनरल फर्स्ट दिन तो हमें च्युइंग करू, तो जतबेले हमें च्युइंग करूछु तो दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल डाइजेशन. ओके, मैकेनिकल ब्रेकडाउन. सो दिस इज द मैकेनिकल ब्रेकडाउन गोटे काम हुए. सेकेंड जिंस कोन हुए कि सलाइवा सब बेले एंटर करे, जेमते हमें कार्बोहाइड्रेट देखथिले कि सलाइवरी एमाइलेज कथा कहथिले. ओके, तो सलाइवरी एमाइलेज मिस जाउथला. So similarly, saliva is a common thing that will माने सेटा सब प्रकार फूड सहित जो हम माने पार्टी जहाँ भी सिक्रेशंस होची लाला वगैरह से गुडा सब सेठी मिक्स हे जाय फूड सहित. ठीक अछि. देन सलाइवरी एमाइलेज बा जो भी सलाइवा एटी सिक्रेट होची एटा कोनोसी प्रकार डाइजेशन करिवो नाही प्रोटीन रो, एंड इट विल जस्ट हेल्प टू सैलो द फूड. तो जो फूड पाइप भितर को हम फूड टा एंटर करची से एंटर करिवारे ताको हेल्प करियो बिकॉज़ इट विल प्रोवाइड ए लुब्रिकेशन काइंड ऑफ थिंग. ठीक अछि. दिस इज द माउथ वाला पार्ट. कमिंग टू द स्टमक. स्टमक रे बर्तमान कोन होची देखो ए केस रे अगेन स्टमक रे हम जो पाकस्थली विषय जे टिके इमेजिन करिवे इट इज समथिंग लाइक दिस. ए टाइप रो किछि गोटे पार्ट थाए. दिस this is something like this. A type of part कोन हुए तार contractions माने just you can imagine this, it is a type of थर्डी टाइप रो अछि. it will be squeezing and it will be expanding. ए टाइप रो जो contractions और expansions of फल रे this is also providing another type of mechanical digestion बुझि परछंती. तो ए टाइप रो भी गोटे डाइजेशन प्रोवाइड करे हमर स्टमक. सो कमिंग टू आवर पॉइंट, हां एठी कोन हुए मैकेनिकल डाइजेशन हुए ड्यू टू द मस्कुलर contractions in the stomach itself. तापरे कोन हबो केमिकल डाइजेशन होबा स्टार्ट हो. व्हाट इज द केमिकल डाइजेशन? इन द स्टमक यू विल गेट HCl एंड पेप्सिन. जेमती माने हमें ये कथा देखुतले कार्बोहाइड्रेट रे सलाइवरी माने एमाइलेज कथा देखुतले, सेमती एई जगह रे हमें पेप्सिन कथा देखिबा. नाउ पेप्सिन विल बी सिक्रेटेड अलोंग विथ द HCl. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द HCl? फर्स्ट HCl कोन करिवो देखंतु जोटा इनपुट हैला जो प्रोटीन टा पेट भितर को आसिला ताको हमें इंटैक्ट प्रोटीन कहउछु. इंटैक्ट प्रोटीन कोन गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यू कैन सी ओवर हियर इट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्सली बाउंडेड काइंड ऑफ प्रोटीन. एटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अछि. से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और डाइजेशन विल बी बिट डिफिकल्ट. सो HCl विल डू व्हाट थिंग इट आकु ना टिके सिंप्लीफाइड करतो केवल. सो यू कैन सी अपन माने जेतबेले तास HCl सहित रिएक्ट करिवो रिएक्शन विथ द HCl व्हाट विल गेट, यू विल गेट द denatured protein. What is the denatured protein? Simple भाषा रे बुझे चेष्टा कले ए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ता छै ताको सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट कर. कैन सी नाउ देयर इज ए मेनी tangled entangled टाइप रही के अछि ताको अनटैंगल्ड करतला से को. ठीक अछि. एटा को ए सुता आपण भावंतु जोटा को बहुत क्लमजी हेते ताको सीधा करतले आपण. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनिट.
Okay. Am I audible right now? Yes, sir. Okay. ठीक है. हाँ, तो जेमती मु कहली HCl जेतेबेले एक्ट अपन करिवो सेतेबेले ताकू डीनेचुरेट करदो. डीनेचुरेट माने सिंपलेस्ट फॉर्म को नहीं आसीबो. नाउ से सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, नॉट सिंपलेस्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो डीनेचुरेट प्रोटीन कहूछु ता ऊपर वर्तमान एक्ट करिवो पेप्सिन. ओके, बिकॉज हम कोन देखथिले दीटा केमिकल एक्ट करिवो गोटे HCl काम सरी गला. नाउ कमिंग टू द पेप्सिन, पेप्सिन विल वर्क on the denatured protein ताकू से कोन करियो छोटो 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 पार्ट रे से भागी दे माने भाग करो. It will divide into the small parts. Okay, आपको हमें कौन कहूँ? This is called as the shorter polypeptides. Okay, or simple polypeptides अपन मन रखंतु. Okay, so normal protein now converted into the polypeptides. Okay, so ये जो कामटा कोठी हैला, this particular work has already done in the stomach. Now stomach को कोठी के enter करियो. Now you will enter the food. Now the food will enter into the small intestine. Small intestine रे कौन हबो? Polypeptides ऊपर another enzyme will work, that is called the trypsin. जेमती पेप्सिन देखिले, now the trypsin will come. Another आउ गोटे भी एंजाइम अछि ताको चाइनोट्राइप्सिन कहउछन. whatever, if you can remember, you remember चाइनोट्राइप्सिन, otherwise simply trypsin केवल मन रखंतु. ट्राइप्सिन कोन करिवो? ए पॉलीपेप्टाइड्स को फर्दर डिवाइड करिवो और स्मॉलर पेप्टाइड्स रे कन्वर्ट कर देबो. Now the smaller peptides, a smaller peptides ऊपर आउ गोटे एंजाइम एक्ट करिवो in the small intestine itself, that is called the peptidase. से peptidase कोन करिवो? Finally it will convert into the amino acid. So what we have seen the digestion of the protein. So protein digest होके finally amino acid रे convert हो गला. Okay, and we know protein is made up of the amino acid. So amino acids are the building blocks. So finally we got the most simplest form of the protein, that is called the amino acid. Now this amino acid is ready to be absorbed into the body itself. Okay, so a process रे कहा किछि doubt? Any doubt in this? I think it is simple thila. Okay, so a particular gene, so if you really want to write in a what I have shown like just in a point format. Okay, you can write in this way, and what I feel, this type of writing is better appreciated because आपन जेमती better बुझा पड़िला, सेमती examiner जे भी आपन को खाता evaluate करछि ताको भी better बुझा पड़िबो जे you have a complete understanding regarding the digestion of the protein. Okay, otherwise you can write in the point format also, that also given over here. जेमती देखंतु digestions आमे कोन करछु, mouth रे there is a mechanical breakdown and large part of your protein digestion that is taken place in the stomach. Okay, स्टोमक रे आमे जेतबेले सरी जाय काम सेतबेले आमे कोन देखिले, सॉरी स्टोमक रे जो मेजर एंजाइम जोटा डाइजेशन करछि, that is called the pepsin. Okay, so pepsin plays an important role in the digestion by breaking down the protein into the peptides. आमे देखि जाथिले. Now हाँ, peptides कौन हुए, that is different thing. In duodenum, duodenum रो अर्थ होची small intestine जो तीनटा small part अछि से भी तो गोटे part होची duodenum. Okay, in the duodenum or in the small intestine other enzymes जेमति कि trypsin हला, chynotrypsins हला. Okay, so these will act on the peptides. Then peptides को कौन करे? Smaller chain peptides से convert करे. Okay, से next होची कौन? जेतबेले smaller chain peptides हे गला ता ऊपर आ गोटे enzyme act करिवो ताको हम कोन कहूछु peptidase कहूछु. And peptidase will convert this peptides into the single chain amino acid, and this amino acid can be absorbed into the blood streams through the wall of the small intestine to complete the process of your digestion. Okay, जेमति हमें गोटे माने स्मॉल डायग्राम करके देखिया चेष्टा करथिले in the process of carbohydrate digestion, similar type of diagram you can draw in this part also. Okay, e type of gote kari paribe. There will be mouth, there will be stomach, and there will be small intestine. So small intestine hub is a small intestine. Okay, just draw a rough diagram like this. अब देखि दियौ जे को जगह रे कोन मेजर काम होछि. Okay, so this is the absorption of the protein, sorry, digestion of the protein. तापर आसीबो absorptions. Absorptions रो अर्थ कोन? You can see over here, just लेवल पर्यंत यदि absorptions आपनकर किछि गोटे clear picture दिमाग रे जदि बनिनी, then try to see over here. Okay, how you are supposed to imagine this one? You can imagine एमती imagine करंतु एटा small intestine रो एटा होची small intestine. Small intestine will be गोटे pipe type रो रहिबो. एटा होची small intestine. ठीक अछि, small intestine रो दीटा
बाउंड्री रहिबो ना जो बाउंड्री माने दीटा वॉल रहिबो दीपट साइड बिकॉज़ गोटे ट्यूब टाइप कंसीडर करो तो दीटा ट्यूब रो दीपट साइड गोटे साइड एटा गोटे साइड एटा ठीक अछि तो ए भितरे अछि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमर खाद्य अछि बर्तमान सो एटा को मन रखंतु ए भितरे जो कैविटी पार्टटा रहला जो स्पेस पार्टटा रहला ताको हमें कहूछु इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ओके अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ जहां मन रखंतु ठीक अछि एटा जो कहली एटा होछि गोटे वॉल आ एटा होछि आ गोटे वॉल ठीक अछि ए भितर गोटे किछि गोटे मांसर पार्ट थिबो ना ए वॉल भितर जोटा से ट्यूब टाको माने कंसिस्ट करिछि जस्ट अपन भाबंतु खाद्य नळी को गोटे आई थिंक यू ऑल कैन इमेजिन दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तो ए भितर पार्ट टाको मन रखंतु दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द इनर वॉल इट इज द आउटर वॉल एटा होछि आउटर वॉल एटा होछि इनर वॉल आ से भितर जो पार्ट टा रहिला दैट विल बी ए मसल पार्ट से मसल पार्ट को हमें कौन कहूछु इट इज कॉल्ड द साइटोसोल ओके जे कोनोसी गोटे सेल भीतर जो पार्ट था ताको साइटोसोल कहते ठीक अछि एंड बियॉन्ड दैट साइटोसोल व्हाट यू विल गेट द टोटल सर्कुलेशंस बाय ब्लड स्ट्रीम समझते की बुझी पारले माने इमेजिन करि परछन व्हाट इज दिस बिकॉज़ ए स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर कोन थिबो रक्त ही तो थिबो ना जोटा बहुत हो देहरे ठीक अछि ऑब्जेक्टिव कोन ए स्मॉल इंटेस्टाइन भितरे जो प्रोटीन रो डाइजेशन हला बा कार्बोहाइड्रेट रो डाइजेशन हला बा फैट रो डाइजेशन हला जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स आसी गले हम माने खाद्य नळी भितर को स्मॉल इंटेस्टाइन भितर को सेई खाद्य गुडक वर्तमान स्मॉल इंटेस्टाइन भितरु केमिति रक्त भितर को पास करिवो ठीक अछि ए जो पास करिया प्रोसेस ता होची ताको ही हमें एब्जॉर्प्शन कहूची एवरीवन क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर आइडिया otherwise let me know I'll make you understand one more time सर आउ थरे रिपीट कर दियंती ठीक अछि एबे गोटे जिंस इमेजिन करंतु गोटे ट्यूब कथा इमेजिन करंतु प्लास्टिक ट्यूब जोटा हमें घरे पानी दोचे जहां भी करचे जस्ट इमेजिन द ट्यूब इटसेल्फ ओके सो दिस इज द ट्यूब एटा गोटे ट्यूब ए ट्यूब रो एपोटे गोटे अछि लेयर एपोटे गोटे लेयर अछि ठीक अछि ए लेयर भितरे गोटे कैविटी अछि माने जोटा एरियाटा जो एरिया दे के हम पानी फ्लो करछि से भितरे जो कैविटी दैट इज कॉल्ड हियर इट इज द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बुझी पारले माने इंटेस्टाइन जो खाद्य नळी भितर को जतले खाद्यटा जो जाउची से भितर जो स्पेस ता दैट इज कॉल्ड द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन गॉट माय पॉइंट वर्तमान एई पर्टिकुलर ट्यूब रो गोटे वॉल गोटे साइड राइट साइड रो गोटे वॉल को देखंतु सेटा को जतले देखिबे इट विल बी ऑफ टू दैट इज फर्दर ऑफ टू लाइट टू साइड गोटे इनर साइड रहिबो गोटे आउटर साइड रहिबो ए दीटा मिसिले तो गोटे साइड रो गोटे परद क्रिएट करिवो ना इमेजिनिंग माने मो कथा बुझी परछन इमेजिन करि परछन यस तो एई जो खाद्य नळी भितरु खाद्यटा कोठी के एंटर करिया दरकार ए भितर को एटा नाउ हियर द टोटल सर्कुलेशन मींस हियर द ब्लड्स आर फ्लोइंग ओके हाउ इट विल गो इट हैज टू डिफ्यूज थ्रू दिस ए जो इनर और आउटर वॉल भितर को देखि डिफ्यूज करिया दरकार ए भागरु से भाग ए पटो से पटो को गॉट माय पॉइंट ए जिंसटा को कोन कहूछु से भितर ए जो ए भितरटा जो देखिले गोटे ट्यूब जो ट्यूब रो गोटे वॉल रे भितरटा देखिले से भितर जो पार्ट ताको हमें कोन कहूछु इट इज कॉल्ड द साइटोसोल माने तार तो होची से जो मांसपेशीटा रहिला जोटा से वॉल रो गोटे साइड को कंस्ट्रक्ट करिछि एवरीवन क्लियर विथ दिस विजुअलाइजेशन सही पड़छि जे कोन करूछु वर्तमान हमें यस सर यस थैंक यू Yes, sir. एटी बायोलॉजी बैकग्राउंड रो के छथि because I have also small doubts regarding this I can ask you okay so let us see intestinal lumen माने intestine रो भितर then intestine रो गोटे वॉल रो आ गोटे वॉल भितर जो पार्ट रहिला ताको हमें ISC थिला ISC माने कोन टोटल सर्कुलेशन सर फोर्थ ऑप्शनल थिला बायोलॉजी मोर ओके ओके साइंस ओके ओके ठीक नेक्स्ट हां पोर्टल सर्कुलेशन माने जोटी ब्लड सर्कुलेट होछ ओके तो आमे कोन पाइलु एटी अछि हमरो एमिनो एसिड ओके तो एमिनो एसिड आ बॉडी भीतर डिफरेंट मिनरल्स थाउची सेमती गोटे मिनरल्स होची सोडियम ओके तो कोन हुए कि एमिनो एसिड आ सोडियम आयन ए तीटा को गोटे कैरियर प्रोटीन
रो हेल्प रे से कैरियर प्रोटीन कोन वी डोंट नीड टू गो डीप इनटू दिस से भितरु जे जिबा हम बेसिक साइंस बैकग्राउंड भितरु पढिया दैट इज नॉट द प्रोरोगेटिव ऑफ सिलेबस ओके तो गोटे कैरियर प्रोटीन रो हेल्प रे कोन करे इंटेस्टाइनल ल्यूमिन भितरु माने खाद्य नली भितरु साइटोसोल भितरु को प्रवेश कर जिवो दैट विल एंटर इनटू दिस ओके प्रो एबे वर्तमान कोन हबो ए एमिनो एसिड आउ सोडियम ए दी जण कोन करंती कि गोटे टाइप रो ही ए जो ट्रांसपोर्टेशन गोटे सिंगल ट्रांसपोर्टेशन पाथ को फॉलो करंती ओके तो ए केस रे कोन हबो जेहेतु आयन रो बैलेंस रहिबा दरकार तो मु एटा ऑलरेडी लास्ट ईयर भी कहिथिली the sodium ion will be diffusing from the cytosol into the bloodstream whereas there will be a potassium ion that will come into the cytosol so that is a balance ta maintain rahibo ठीक अछि so it will take place like this au ei jo process bitare ei process ta kemiti hobo because ei process haba pai hele because this transportation requires you can say energy darkar se energy ko to asibo that will be provided by the ATP एटीपी जोटा कमे एनर्जी करेंसी कोछु से एनर्जी करेंसी गोटे जस्ट इमेजिन करंतु गोटे गेट टाइप रोची से गेट को फैसिलिटेट करूची बाय दिस एटीपी बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन एनर्जी ए जो गोटे पोर्टल गोटे ओपन हबो गोटे गेट ओपन हबो से गेट ओपन हबा समय रे जतबेले ए सोडियम और पोटेशियम आयन रो एक्सचेंज होतबो सेही एक्सचेंज भीतर रे ही को हबो दिस एमिनो एसिड विल गो थ्रू टू द अदर साइड so it means it will just accompany this sodium ion because to ए जो आयन एक्सचेंज होआ पई जो गोटे स्मॉल गेट ओपन होची से ओपनिंग भीतर ही एमिनो एसिड will also diffuse into the portal circulation this much you should remember other than that it is that beyond this it is not required okay ठीक अछि just see this the amino acid associated with a carrier protein and sodium ion okay so in the inner side of the intestinal membrane whereas where releasing the amino acid and sodium ion that takes place into the cytoplasm and from the cytoplasm now next wording the lekhini from the cytoplasm it will diffuse into the portal circulation in exchange or the in the similar path that is being followed by the sodium and the potassium ion exchange okay as a path ko facilitate kiye karuchi that energy will be provided by the ATP okay till this point samaste bujhi parle हम बुक रे खोजिबी मिलिबो ने डिफिकल्ट ए गुडा को मिलिबा ठीक अछि ना मु कोनी मु कुछ मन रो लिखि दिछि बट आई हैव आल्सो डन सम R&D from that book and finally found like okay this is the most you can say concise and the precise part that you can write in your answer sheets okay so this is the माने absorption सरला now coming to the metabolism part metabolism तो अर्थ कोन वर्तमान सेही जो प्रोटीन हमको डाइजेस्ट करले बा जो एमिनो एसिड्स हमको मिलला से एमिनो एसिड्स को बर्तन वी हैव टू पुट इन प्लेस ताको हमें काम रे लगेबा केमती काम रे लगेबा नाउ बिफोर दैट जस्ट सी एमिनो एसिड रो मेजॉरिटी कोटी टेक अप हुए द एमिनो एसिड विल प्राइमरीली टेकन अप इन द लिवर रे आसे की मोस्टली स्टोर हुए पोर्टल सर्कुलेशन रो बा रक्त भीतर देई की इट विल गो टू द लिवर और लिवर रे कोन हुए डिफरेंट काम रे ताको यूज करा हुए मोस्टली बॉडी प्रोटीन हिसाब रे ताको यूज करा हुए आउ काहा ऊपर डिपेंड करे it depend काहा ऊपर करिवो because it will depends on this following things कि केते हमरो एमिनो एसिड लिवर भीतर को एंटर कला केते हमरो बैलेंस रहिला केते एमिनो एसिड देह रे यूज हला ठीक अछि से काहा ऊपर डिपेंड करिवो से डिपेंड करिवो प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर प्रोटीन रो ब्रेकडाउन ऊपर एमिनो एसिड रो इंटर कन्वर्जन ऊपर आ एमिनो एसिड रो सिंथेसिस ऊपर ओके ए चारटा जिंस ऊपर से डिपेंड करिवो प्रोटीन रो सिंथेसिस रो अर्थ कोन देखंतु देह भितरे ना बहुत गुडे जिंस होची जेमति आपनकर whatever even some of the hormones are also the protein some of the most of the hormones are the protein hormone भी जदी रिलीज होची ना it is also a protein तो hormone रो synthesis जो होची that is called protein synthesis one of the example okay protein रो breakdown बेडे बेडे आम देहरे किछि प्रोटीन अछि जहार ब्रेकडाउन होछि तो हमें किछि वर्कआउट करूछि तो प्रोटीन रो ब्रेकडाउन हुए सेति पे आपण स्टेरॉइड्स नियंती बा प्रोटीन सप्लीमेंट नियंती तो दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन रो ब्रेकडाउन ओके नेक्स्ट होछि एमिनो एसिड रो इंटर कन्वर्जन आपण देखिबे कि एमिनो एसिड एम्ति नै जे सबले एमिनो एसिड रे ही यूज होबो एमिनो एसिड रे गोटे नाइट्रोजन कंपाउंड थाय तो एमिनो एसिड रो फर्दर ब्रेकडाउन भी पॉसिबल हे पारे बिकॉज़ इट इज कंसिस्ट ऑफ द माने कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम देन देयर इज ए नाइट्रोजन एटम एंड ए सल्फर एटम तो तार मध्य कन्वर्जन ही पारे
inside the body ता ऊपर मध्ये डिपेंड करिवो नेक्स्ट इज द अमीनो एसिड रो सिंथेसिस तो अमीनो एसिड सिंथेसाइज कोड सिंथेसिस होउची बिकॉज़ इन द डाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड तो ए चारिटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची कि बॉडी रो प्रोटीन आ अमीनो एसिड ए मानको भितरे बैलेंस केमती मेंटेन हबो मोटा मोटी जति देखिबा टोटल जते अमीनो एसिड बॉडी भितर को एंटर करिवो तार 20% जे देखिबे द 20% ऑफ द अमीनो एसिड एंटरिंग टू द लिवर and utilized for the synthesis of your enzyme and plasma protein okay blood भितरे plasma proteins थाए blood रो जो plasma proteins होची ताको तयारी करिया पई आ डिफरेंट जो एंजाइम जो पेप्सिन देखुतिले बा माने एमाइलेज देखुतिले एगुडा को मध्ये एंजाइम्स ए एंजाइम तयारी होवा पई मध्ये यू नीड प्रोटीन तो 20% प्रोटीन ए एंजाइम तयारी करिबा प्लाज्मा प्रोटीन तयारी करिया रे खर्च होई जाय ठीक अछि 57% of your protein amino acids that is taken up in the liver से कौन हुए that is catabolized माने liver ताको use करे बा liver ताको store करे बा liver बुझी परछन इधर से readily use कर दबा otherwise से store कर दबा next 23% जो हमर amino acids रहिला that will enter into the portal circulations systemic circulations मध्ये ताको कहंती systemic circulations रे enter करियो काहे कि बिकॉज़ बॉडी रो अन्य पार्ट रे मध्ये तो प्रोटीन आवश्यकता अछि ना वी कॉल लाइक कि आमे कोन कहउछु कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक तो आपण को मसल गेन होउची यू गॉट योर माने किछि प्रकार हीलिंग होउची बॉडी रो किछि रिपेयर होउची बा बॉडी रो बिल्डिंग्स होउची तो ए सब पॉइंट मध्ये यू नीड अ प्रोटीन सो दिस इज द रफ 100% calculations of your amino acid that is entering into the body okay 20% कथा कहली जोटा कि आपन को एंजाइम और प्लाज्मा प्रोटीन हबो 57% जो प्रोटीन होची अमीनो एसिड कथा कहउची ये लिवर रे ही कैटाबोलाइज हो लिवर रे ही सेटा यूज हे जिवो नेक्स्ट 23% ऑफ जो प्रोटीन्स होची that will enter into the systemic circulations okay so it is about the metabolism ताकू छेडिला परे आउ कहा का ऊपर डिपेंड करे कि हम प्रोटीन केते दरकार बॉडी रे ओके तो अमीनो एसिड रो बैलेंस ऊपर डिपेंड करूची इट अमीनो एसिड बैलेंस डिपेंड्स ऑन द एज ऊपर डिपेंड करे मे बी जो एज रे बर्तन आपण छंती जो प्रकार जति कि आपण प्रोटीन कंज्यूम करछंती मे बी आउ गोटे एज रे मे बी आपण को तळो एज रे बा आगु को जो एज को आपण अप्रोच करिवे सेही एज रे सेही पर्टिकुलर सेम अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड may not be sufficient okay so protein requirement changes with the change in the age कहीं कि हमें सपोज एडोलसेंट कथा देखुचे एडोलसेंट रे हमें कोन देखुचे कि वी गॉट ए रैपिड ग्रोथ ओके बॉडी रो रैपिड ग्रोथ होची तो रैपिड ग्रोथ हबो केमती बॉडी रिक्वायर्स दैट मच ऑफ अमीनो एसिड और द प्रोटीन फॉर ए बॉडी बिल्डिंग okay so in that age you require higher amount of amino acid okay so the amino acid may have, so the protein may have the amino acid that meets the need of a one age group while it may be relatively limited in meeting the needs of another age group so age ऊपर depend करे next होची calorie intake आमे केते खाउचे आमे जेमति कहिथिले कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट तार अर्थ कोन जदी आमे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जदी कंज्यूम न करिया सॉरी कार्बोहाइड्रेट जदी कंज्यूम न करिया दिस प्रोटीन विल ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड योर एनर्जी बट दैट इज नॉट द प्राइमरी वर्क ऑफ अ प्रोटीन so that is called the calorie intake ऊपर डिपेंड करछि immobility जदी आमे जदी चलला बुला करूने जदी आमे आइसोलेट हेकी गोटे जगह रे रहउचे देन आल्सो that protein रो जो रिक्वायरमेंट गुडा को अछि सेटा कमी जिवो ओके तो एबिलिटी टू सिंथेसाइज द प्रोटीन gradually decreases among the people who are immobile एक कथा एडी डाउट हेबेनी जे सिंथेसाइज प्रोटीन रो अर्थ कोन बिकॉज़ मो कहली ना कि बॉडी भितरे अमीनो एसिड आसिया परे ताको पुनी प्रोटीन रे हमें कन्वर्ट करछे जेमति कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कथा कहले हार्मोन कथा एंजाइम्स कथा तो यदि हम बॉडी रे चलाबुला ही करूनु तो मे बी सेही जो प्रोटीन गुडा को बॉडी रो दरकार ता रिक्वायरमेंट मध्ये कमी जाय फॉर एग्जांपल एल्डरली पीपल हु टू बेडरिडन पेशेंट्स होंतु बा एस्ट्रोनॉट्स होछन ठीक अछि इंजरी एटा तो नॉर्मल जिंस इंजरी हेछि माने हाई प्रोटीन रो रिक्वायरमेंट अछि टू हीलिंग तो इंजरी हील करिया पे नेक्स्ट इमोशनल स्टेबिलिटी जदी हमें फियर हो एंजाइटी हो एंगर हो जो इमोशनल माने स्टेबिलिटी रो डिमेंशंस रहिला एगुडा करे हमें कोन देखुचे generally with this there will be a loss of nitrogen from our body okay and due to kahin ki ida nitrogen loss way because of the hormonal release generally co hormonal release way anyone from the biology background रे sorry adrenal
एड्रेनल यस समस्त को ना एड्रेनल सर्ज होउची कोइ की सो एड्रेनल जो हार्मोन ताको माने जनरली कोन कि से फियर हो फाइट हो बा फ्लाइट हो ताको 3F कोन हां यस सो से जो हार्मोन रो रिलीज में और से हार्मोन कोन से हार्मोन रो तयारी हो पई कोन दरकार वी नीड योर nitrogen so there will be a loss of nitrogen in the body in the case or in the event of your emotional stability in the event of emotional instability rather okay सेति पे एग्जांपल देखो तो स्टूडेंट्स मानो को जनरली नाइट्रोजन लॉस देखा जे तोले एग्जाम स्ट्रेस था नॉट ओनली स्टूडेंट्स हमको भी हुए जे तोले हमें एग्जाम वगैरह पर जे तोले हमें नर्वस फील करू इंटरव्यू सामने रो से जिंस लागे okay so these are also some of the factors that determines the you can say the requirement of the protein okay. So this is all about your protein part. Next, let us go to the fat. Okay. See, बर्तन मो जो जिनसटा आपन को फैट रे बर्तन कहिबी this is for your understanding. Okay. If at all you're not able to understand, let me know. I'll make you understand one more time. But जरूरी नुहो जे सब किछि आपन को मन रखिबे कहि की because see नोट स्टार्ट होची 8 हला किंतु एटा मु ऐड करिछि बिकॉज़ जो नोट से जहां आपण बर्तन पढिबे एंड इफ गो यू रिफर एनी सोर्सेस यू वोंट फाइंड दिस पार्ट ओके सो कोन हबो कि एई वाला नोट्स वाला पार्ट पढिले एवरीथिंग विल बी ड्राई lot of thing you may not be able to correlate and visualize so to facilitate your visualization केवल आपन हेल्प करिया पे बेटर विजुअलाइजेशंस पे आई एम गोइंग टू make you understand or I am going to go through this particular portion okay if at all किछि गोटे छोटो पार्ट रे आपण बुझी पारले बा रही गला after one or two attempt then also don't panic because this particular part is just for your understanding not to write in your examination because amount of a pattern of writing बदली गला नि 20 मार्कर रे से जदी क्वेश्चंस आपण को इते ड्रास्टिकली आसे कि केवल राइट द ओनली द डाइजेशन पार्ट ऑफ योर फैट in a 20 marker format then maybe you have to write this otherwise you may not okay and this is not only digestion this is digestion metabolism and absorption tar dita part dekha first one visualization so next is your direct theory part okay again digestion kon hobo bartan fat ro jemti ame amino acids kotha कहउथिले तो सेमती फैट रो कोन हबो के फैटी एसिड्स आसीबो बट फैटी एसिड आसिया पूर्व जो कंपाउंड ता में माने खाउचे जोटा में कंज्यूम करूचे दैट विल बी योर ट्राइग्लाइसराइड ओके तो ट्राइग्लाइसराइड विल बी द कंपाउंड दैट इज द बेस मटेरियल जोटा को हमको फर्दर डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट करिया होचे ओके so let us see this a fat why you will understand over here if why the fat should not like we always say like okay 80 fat because you will see after digestion again all the molecules the simpler molecules will again combine and that combined part only going to diffuse into your body so finally digestion as such kichi हुए नहीं and fatty acids obviously digestion काहे की हुए मु कहि भी से कथा के माने सिंपल कथा कहया गले you consider this as a triglyceride what will happen will divide this triglyceride into smaller part like this okay but in this smaller part all the smaller part will not be able to diffuse into the bloodstream कौन हबो ए स्मॉलर पार्ट उडा को ब्लड स्ट्रीम बिल्कुल को डिफ्यूज कर पेबे नाही बिकॉज़ ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन सेति पे हमें ताको कोन करिवा ताको पूनी आउथरा एमति सजेवा like this and this part will resemble with the triglyceride itself then ये जाके ब्लड स्ट्रीम बिल्कुल को डिफ्यूज करिवो गॉट माय पॉइंट मु कोन कहूची कि हमें फास्ट हम गोटे बड़ पार्टिकल थिला से बड़ पार्टिकल को डिवाइड करिवा दैट इज दैट डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड किंतु एब्जॉर्प्शन हे परिवो नाही तारो किछि पार्ट एब्जॉर्ब होबा और किछि पार्ट रहि जिवो ताको फर्दर फैसिलिटेट करिया पे आपे पूरी ताको मिसेइबा आउते ताको गोटे काम करिवा ट्राइग्लाइसराइड बेला कन्वर्ट करिया सो व्हेनेवर you are going to read कि ट्राइग्लाइसराइड सरी गला पूरी एब्जॉर्प्शन से ट्राइग्लाइसराइड आउथरे में अरेंज करछु just make something in your mind very clear these triglyceride and these triglycerides are different and this one is a made of triglyceride just to facilitate जोटा कि आपनकर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इजी करिया पे करा होछ ठीक अछि जति बुझिले बाकी कंप्लीट हल्ला परे जे डाउट रहबो पछी ठीक अछि सो हमें देखिया कोन ए केस रे माउथ और स्टमक ए दीटार जो
माने डाइजेशन रो जो पार्ट रहिला एटा एते सिग्निफिकेंट नुह बहुत कम पार्ट प्ले करंती मेजर डाइजेशन will taken place in the small intestine. So mouth and stomach, these are small role in the fat digestions. Mainly, this is M, mainly the digestion takes place at the small intestine itself. Okay, देखिया केमती होची माउथ रे आसिला मेकानिकल यू ब्रेक डाउन होबो दिस इज मिक्सिंग एंड चर्निंग होची सॉरी मेकानिकल ब्रेक डाउन होची एटी भूले पड़ जल्दी नेक्स्ट ए जो मुहरे हमर जो सलाइवा जो बाहरची से सलाइवा रो देखंतो फैट केस रे जो हमें एंजाइम को कंसीडर करिया से एंजाइम रो ना होची लाइपेज मुहरे अछि माने लिंगुअल लाइपेज पेट भितर अछि ताको हमें गैस्ट्रिक लाइपेज कहिबा जेतेबेले इंटेस्टाइन भितर को पड़िबा ताको हमें पैनक्रियाटिक लाइपेज कहिबा तो लाइपेज विल बी कॉमन because of the lipid the name is derived such okay तो एक केस रे मुहर फास्ट ने मेकानिकल हमें तो कुछ छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करतले देन लिंगुअल लाइपेज ताको कोन करिवो ताको एनगल्फ करिवा को हेल्प करिवो छोटो मोटो डाइजेशन करिवो बट मेजर पार्ट किछि हबो नाही कमिंग टू स्टोमक रे मुझे जेमति कहली सेही जो पाकस्थलीटा जेतोले आगु को पछु को होची कंट्रैक्शन एक्सपांशन होची ताको हमें मिक्सिंग बा चर्निंग कहूछु सेही प्रोसेस रे मध्ये आउ किछि ब्रेकडाउन हबो बट किछि डाइजेशन होनी ब्रेकिंग डाउन होची केवल छोट बड़ कणिका गुडा खाद्य छोट कणिका रे कन्वर्ट होची दैट्स ऑल ओके here also there will be limited enzyme digestion will take place over here with the enzyme name is called the gastric lipase. Now coming to the main part that is called the small intestine रे प्रथम जिंस कोन दरकार बाइल दरकार बाइल एसिड सुनथियो समस्ते बाइल प्रॉब्लम ओडिया रे कोन कोते आई एम नॉट एबल टू रिकॉल तो बाइल कोन करिवो आपन को फैट को इमल्सिफाई करिवो इमल्सिफाई रो अर्थ कोन एमति मन रखो जो जिंस को हम मैरिनेट करछु हां पित्त वेरी गुड हां जो हम कहछु पित्त जो तो पैनक्रियाज अछि हमर तो पैनक्रियाज रु बाहरे सॉरी नॉट पैनक्रियाज लिवर रु बाहरे बाइल ग्लैंड्स अछि लिवर भितरे बाइल्स कोन करे इमल्सिफाई रो अर्थ किछि नाही ताको दे फुले दे सिंपल कथा जोटा कि डाइजेशन रे हेल्प करिवो ओके हम जेमति माने पखाल भात करिया पे भात को ऊपर पानी पके दो जे टिके स्वेल अप हो जाउची इट्स समथिंग लाइक दैट ओके जस्ट फॉर योर इजी विजुअलाइजेशन आई एम टेलिंग लाइक दिस ठीक अछि तो बर्तन इमल्सिफिकेशन सही कला नाउ देयर विल बी एन एंजाइम द एंजाइम कॉल्ड द पैनक्रियाटिक लाइपेज इन पैनक्रियाटिक लाइपेज कोन करिवो इमल्सिफाइड फैट को फर्दर छोटो पार्ट रे डिवाइड करदो ठीक अछि एवरीवन इज क्लियर विथ दिस तो आम पार्टी भीतर पेट भीतर कोन आसीला वी गॉट द फैट ड्रॉपलेट्स जोटा हमें ट्राइग्लाइसराइड्स कहूछु एट देखंतु ट्राइग्लाइसराइड क्लस्टर करिवो ट्राइग्लाइसराइड गुडा को सब गुडा को मिसी जाई कि कोन फॉर्म करंती ताको ड्रॉपलेट्स रे फॉर्म करंती सेही ड्रॉपलेट्स आसीला हम पेट भीतर को व्हाट आई टोल्ड कि मुहरे बेसी किछि माने डाइजेशन हबनी पाकस्थल रे मध्ये विशेष किछि डाइजेशन हबनी एवरीवन मोस्ट ऑफ द फूड most of the fat will directly go into the your small intestine as it is with the smaller particle okay smaller particle hisab re ame kon kale large fat droplets that will go into the small intestine the first form isla bile misila what bile will do like this mujhe bhi कहले तो ये फुले देबो केवल okay so it is called the emulsification by the bile now a emulsified जो रहिला emulsified triglycerides जो रहिला that will be acted upon by the lipase here the lipase is the pancreatic lipase जेतबे ता ऊपर मिसिला से कोन करियो ताको छोटो छोटो पार्ट रे डिवाइड कर दो there will be some component it is called monoglyceride माने एमजी टाइप रो बेस रहिबो बेस ऊपर गोटे सिंगल अटैच हेति ताको कहते monoglyceride and there will be small parts ए small parts गुडा को आको हमें कहूछु fatty acids okay this is the final component of your digestion एतिकी होची डाइजेशन एतिकी तो समस्त बुझ जाइतिबे नाउ कमिंग टू द एब्जॉर्प्शन ए एब्जॉर्प्शंस रे ही टिके दिमाग दवा को पड़िबो नाउ इन एब्जॉर्प्शन व्हाट विल हैपन वंस हम डाइजेशन ही गला हमको कोन कोन मिलला जस्ट टिके देखि दियंतु गोटे हमको फैटी एसिड मिलिबो मोनोग्लाइसराइड्स परतन आपण देखिले ताको छाडला परे किछि ग्लाइसरोल्स मिलिबो ग्लाइसरोल्स माने कोन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्लाइस माने ए जो मोनोग्लाइसराइड्स रो आउ टिके छोटो पार्ट ताको ग्लाइसरोल्स कहउछ ठीक अछि ग्लाइसरोल मिलिबो ताकू छाडिला परे आमे जेमति कहउछु कि हम जे कोनो जिंस हम कंज्यूम करूछु सेठी किछि कोलेस्ट्रॉल थाउछि नॉट जे कोनो जिंस फैट रिलेटेड जिंस दउ जे बारंबार कहउछु ना कोलेस्ट्रॉल अछि खाना हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ी गला तो कोलेस्ट्रॉल इज सच थिंग दैट विल नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट इन योर बॉडी ठीक अछि
सो कोलेस्ट्रॉल आपनको बॉडी रे जेमिति पाटरे भर्ती कले सेमिति आपनको इंटेस्टाइन भितर को एंटर करि गला देयर इज नो डाइजेशन विल टेक प्लेस इन द कोलेस्ट्रॉल पार्ट राइट नेक्स्ट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स देखंतु आपनको देह रे जते विटामिन्स अछि तो विटामिन्स भितरु गोटे होची देयर विल बी देयर विल बी सी एंड देयर विल बी पी these three type of vitamins will be water soluble जोटा कि पानी रे soluble होबो rest of the vitamins जो आपनको A vitamins हो D vitamins हो K vitamin हो and etc whatever other vitamins ए vitamins गुडा को फैट रे ही soluble हुए आ गोटे पर्टिकुलर organ रु आ गोटे पर्टिकुलर organ पर्यंत ट्रांसपोर्ट होथे ठीक अछि जदि आपनको देह रे फैट गला तार अर्थ होची सेही पाखा पाखी जो भी vitamins थिबो जोटा भी फैट soluble vitamins थिबो से आपे आपे ता सहित ऐड हे जिवो समस्त बुझी परले जिंस को बिकॉज़ जेतोला आपण पानी पकोचोती पानी पाटे जहा अछि that is going to dissolve with the water only na so it is like something ki whatever fats are available that is fat soluble जदि फैट हम देह को एंटर करछि that is going to take all the fat soluble vitamins along with it got my point so digestion ro products होछि these are the 5 type of digestion product we can get ठीक अछि जो फैटी एसिड रहिला फैटी एसिड रो पुनी दीटा पार्ट अछि देयर विल बी सम लॉन्ग चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड विल सी टू इट ओके नेक्स्ट जेतबेले ए डाइजेशन रो प्रोडक्ट गुडा को सहित बाइल सॉल्ट मिसिबो ताको हमें गोटे ना देचु जस्ट फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग ताको हमें कोन कहूछु इट इज कॉल्ड द माइसेल्स MICELLS इट इज कॉल्ड द माइसेल्स माइसेल्स हमें काहे की फॉर्मेशन करलु बिकॉज़ दिस माइसेल बिकॉज़ आमो देहरे ए जो फैट रो डाइजेस्टेड जो पार्ट उडा रहिला ना ए माने ना ए सपोज डाइजेस्ट ठीक अछि intestine भितरे this cannot move close to the wall of the intestine रो wall पाखु को निजे निजे मूव करि परिबे नाही ओके to facilitate this तो ताको हेल्प करिया पई केमिति they can move close to the wall then केमिति से माने डिफ्यूज करिवे आर पटको into the blood stream सेही भितर को केमिति हे परियो ता पई आमे ए सब अरेंजमेंट्स करूछु ओके आमे तो कोन भगवान को रखछन वी आर जस्ट स्टडीिंग ऑन दिस तो बाइल सॉल्ट जेतबेले फैट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होची ए गुडा को जो पांचटा में देखले दिस इज द फैट डाइजेस्टेड प्रोडक्ट तासे तो मिसिला ताको में गोटे नुआ ना देलु दैट इज कॉल्ड द माइसेल्स तो माइसेल रो काम कोन इट विल हेल्प द फैट टू गेट क्लोज इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल ओके वंस द इंटेस्टाइनल सेल पाखु को पहुंची गला बा ता भितर को पहुंची गला देन कोन हबो से जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड अछि आ ग्लाइसरोल अछि जोटा तिते छोटो छोटो पार्ट अछि हियर यू कैन सी शॉर्ट चेन फैटी एसिड आउ ग्लाइसरोल ए डीटा इजीली डिफ्यूज हे जिवे ब्लड भितर को पसिबे दे हैव दैट कैपेसिटी ओके सो नाउ these two can easily diffuse they can directly diffuse into the blood streams okay बर्तन रही कोन गला लॉन्ग चेन फैटी एसिड रही गला मोनोग्लाइसराइड्स रही गला एंड कोलेस्ट्रॉल्स रही गला आउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स रही गला ठीक अछि एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए माने निजे निजे डिफ्यूज हे परिबे नाही से मानको गोटे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल दरकार आरपोर्ट साइड को जिबा पे गोटे व्हीकल दरकार जेमते हमें प्रोटीन केसे देखिथिले गोटे कैरियर प्रोटीन हेल्प करथला से मानको सेंटी टाइप एट भी गोटे कैरियर प्रोटीन ही हेल्प करिवो से कैरियर प्रोटीन रो ना कोन ताको हमें दबा कैरियर प्रोटीन रो ना दबा दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड्स विल सी सो वर्तमान फैटी एसिड्स मोनोग्लाइसराइड्स ए दीटा को जति बिसे दबा पुणी कोन हबो ट्राइग्लाइसराइड ही हबो ना बिकॉज़ एटी देखंतु हमें जतले डिवीजन करथले कोन थिला मोनोग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड ए दीटा ही बाहर थिला ए दीटा को जति पुणी हमें मिसेबा व्हाट वी कैन गेट वी विल गेट द ट्राइग्लाइसराइड्स क्लियर समझते बट ए ट्राइग्लाइसराइड और ओरिजिनल ट्राइग्लाइसराइड भितर डिफरेंस रहिबो मु कोन कहितली कि सेटा गोटे बड़ पार्टिकल थिला ताको हमें छोटो पार्टिकल डिवाइड कलु बट ताको आउथरे सजै के गोटे बड़ पार्टिकल भेला रिजेंबल करूछ व्हाट माय पॉइंट सो हियर ए दीटा मिसी के ट्राइग्लाइसराइड हला नाउ द ट्राइग्लाइसराइड कोन करिवो कोलेस्ट्रॉल और फैट ए सब सहित मिसी की आ गोटे कंपाउंड करिवो जेमते हमें गोटे माइसेल कहले सेमती गोटे कंपाउंड करियो ताको हमें कहबा चाइलोमाइक्रोन्स CHYLOMICRONS चाइलोमाइक्रोन्स से चाइलोमाइक्रोन्स रो केमिति तार माने फंडा केमिति रहबो तार स्टिक स्ट्रक्चर देखो तो इट इज समथिंग लाइक चाइलोमाइक्रोन्स ए केस रे मझिरे रही गला ट्राइग्लाइसराइड हियर इट इज द ट्राइग्लाइसराइड ता चारियाडे गोटे सेल फॉर्मेशन जो करिछि इट इज कॉल्ड द
फॉस्फोलिपिड का चारिया गोटे सेल फॉर्मेशन करछि जोटा हमें गोटे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हिसाब रे यूज करिवे ओके तो चाइलो माइक्रोन्स रो कोर रे कोन थाए ट्राइग्लाइसराइड्स थाए तार आउटर कवरिंग रे कोन थाए वाटर सॉल्युबल फॉस्फोलिपिड्स थाए फॉस्फोलिपिड माने गोटे टाइप ऑफ प्रोटीन थाए सेटा ठीक अछि बर्तमान दिस चाइलो माइक्रोन्स जो गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन कले फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन ट्रैवल इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स तो देखंतु केमती होला माइसेल्स फॉर्मेशन हेतिला एटा इंटेस्टाइन जेमती मु कहितली एटा इंटेस्टाइन रो एटा भीतर पार्टटा एटा ब्लड्स ओके तो चाइल्ड माइक्रोन्स भीतरु को एंटर कला ए भीतर को एंटर करिवा परे बिकॉज़ माइक्रोन्स करि गला एंटर करिवा परे जो स्मॉल चेन आमे देखि जे फैटी एसिड्स रहितला बा ग्लाइसरोल्स रहितला एगुडा को डिफ्यूज करजिवे अलगा किंतु जो बड़ गुडा को पार्टिकल रहि गला से बड़ पार्टिकल्स गुडा को कोन कले चाइलो माइक्रोन्स रे फॉर्मेशन कले द चाइलो माइक्रोन्स विल हेल्प इट टू मूव टुवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम आ ब्लड स्ट्रीम पाखु जतले पहुंचीबो आउटर वॉल पाखु से आउटर वॉल रे ए जो बाहर जो कैरियर प्रोटीन ता सेटा सेठी ही रहि जिवो तार किछि काम नै ता काम होछि केवल पुश करिया ता से पुश कला भीतर जो कंपाउंड रहला दैट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम क्लियर किछि बुझा पड़ला Yes, sir. just go through this class करिया परे गोटे थरो go through this I think you'll get to understand jodi mane still if you are not able to get it then do let me know ebi je upload he ni na pdf ନାଇଁ ସାର୍ ହେଇନି तो से पीडीएफ टा हमर नोट टा खाली दरकार से हाँ। पीडीएफ टा हो बुझुछि no problem so that's why I asked you कि हे ni na okay I'll talk to Deepak sir kali mu कथा भी सांगो तो कि it should be uploaded at the earliest possible because नहले एटा बुझा पड़ियो ना आपन ठीक अछि I'll look into it don't worry ठीक अछि तो एबे जहां हमें देखिले जस्ट लेट अस सी इन माने टेक्स्ट फॉर्म रे थोड़े देखि देबा ताकू डाइजेशन रो प्रोसेस देखंतु सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू द स्मॉलर मोनोग्लाइसराइड्स यूनिट केमती विथ द हेल्प ऑफ द लाइपेज ताको हमें डाइजेशन ऑफ फैट कहूछु ठीक अछि तो एटा केमती होची तो डाइजेशन ऑफ द फैट बिगिंस इन द माउथ थ्रू द केमिकल लिंगुअल लाइपेज सहित मुहरे लिंगुअल लाइपेज बाहरला फैट भितर जो गोटे पार्ट है जोटा हम कोलेस्ट्रॉल कहूछु कोलेस्ट्रॉल इन द फैट इज नॉट ब्रोकन डाउन ए ब्रेक डाउन हबो नाही बाय द लाइपेज एंड स्टे इंटैक्ट अंटिल द स्मॉल इंटेस्टाइन ओके तो लिपिड कंटिन्यू टू डाइजेस्ट इन द स्टोमक रे कोन आसीबो गैस्ट्रिक लाइपेज आसीबो आ मैकेनिकल डाइजेशन सेटा हम चर्निंग कथा कहउतली हाउएवर मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन as we have already discussed तो द केमिकल फ्रॉम द पैनक्रियास कौन आसुची गोटे होची बाइल सॉल्ट लाइपेज ओके बा ताको अपन पैनक्रियाटिक लाइपेज भी कोई परंती इट विल बी सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट विल हेल्प द ब्रेकडाउन जोटा कि फाइनल ब्रेकडाउन पे हेल्प करिवो ओके और वंस सेटा हे गला देन से एपिथेलियल सेल भीतर ता इंटेस्टाइनल सेल भीतर को अपन को से एंटर कर दियो फाइनली इट विल एंटर इनटू द ब्लड ठीक एटा होची अपन को डाइजेशन जोटा कि इजी थिला सिमिलरली जेमते हमें सब फॉलो करछु ए टाइप गोटे डायग्राम हमें ड्रॉ करिवा विथ द माउथ the lingual lipase from the you can say gastric lipase in the stomach and bile salt lipase or the pancreatic lipase in the pancreas or the small intestine ठीक अछि coming to the absorptions जोटा सब तो tedious वाला पार्ट थिला so it will occur in the small intestine केमिति हबो again से fatty acid और glycerol जोटा डाइजेस्ट हे जाइथिला से गुडा को मिसी की कोनी कोन फॉर्मेशन करिवे ट्राइग्लाइसराइड और ट्राइग्लाइसराइड सहित जो अदर पार्ट्स गुडा हमें देखिले जो fat soluble vitamin these that bile salt इस मिसिया पर गोटे नवा कंपोनेंट फॉर्मेशन करिवे दैट इज कॉल्ड द माइसेल्स ठीक अछि तो फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड्स सॉरी हां फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लाइसराइड्स दिस विल लीव कोन कहितली कि फैटी एसिड जोटा सिंगल सब छोटो पार्टटा आ मोनोग्लाइसराइड जोटा छोटो पार्ट ए दिटा लीव कर जिवे माइसेल्स को and they can directly diffuse into the epithelial cell of the small intestine and that the blood cell blood भितर को enter करिकल then जो remaining long chain fatty acids हला आउ जो
आपणकर मोनोग्लाइसेराइड्स हला एगुडा तो सब रही कि आउथरे ट्राइग्लाइसेराइड्स हमें फॉर्मेशन करबा ट्राइग्लाइसेराइड्स ऊपर आ गोटे कोन करबा हमें कोलेस्ट्रॉल को ऐड करबा गोटे कैरियर प्रोटीन को ऐड करिया कोन गोटे फॉर्मेशन करिया वी कैन फॉर्म ए chylomicrons chylomicrons will travel through the blood streams and enter into the our body the adipose tissue को enter करिवो बा body the storage unit को pass on करिवो एटा हमें absorption process को जोटा कि I think out of the protein and carbohydrate the fat ro absorption is टिके bit difficult okay but it is not that difficult to remember just gote dita reading re you will be able to remember this coming to this metabolism हमें केमती मेटाबोलाइज करिबा ताको leave it because एटा हमें ऑलरेडी देखि सरचे directly come to the part of the metabolism गोटे होची lipolysis गोटे part of metabolism next होची ketogenesis और third part होची there is a lipogenesis तो first होची lipolysis what is lipolysis okay अर्थ होची फैट रु जो प्रोसेस रे एनर्जी बाहर से प्रोसेस को हमें कोन करछु लाइपोलिसिस कहछु ओके टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फैट जो ट्राइग्लाइसराइड थिला ताको हमें फास्ट डिवाइड करिया ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड रे ए जो प्रोसेस को डिवीजन जो कहछु ए जो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होची ताको हमें लाइपोलिसिस कहछु लाइपो माने अर्थ होची फैट लिसिस माने होची भाग करिया फैट को भाग करले ग्लाइसरॉल्स एंड फैटी एसिड रे वर्तमान हम पाखरे अछि ग्लाइसरॉल्स और फैटी एसिड्स वर्तमान से भितर दरकार हमको फैटी एसिड्स तो फैटी एसिड्स ऊपर वर्तमान जते बेले ऑक्सीजन ऐड हबो माने फैटी एसिड रो ऑक्सीडेशन हबो जते बेले आ गोटे कंपोनेंट फॉर्मेशन हुए दैट इज कॉल्ड द एसिटाइल CoA ओके एसिटाइल CoA तो एसिटाइल CoA कोन एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट जोटा कि आपन को क्रेब साइकिल रे यूज हबो क्रेब साइकिल रे यूज हबो एसिटाइल CoA कोठु बाहरिबो फैटी एसिड रो ऑक्सीडेशन फल रे तयारी हुए ए जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो हैला ताको हमें कोन कहउचो ताको कहउचो हमें ग्लाइकोलिसिस लाइपोलिसिस गल जाइतला लाइपोलिसिस रो अर्थ कोन जो ट्राइग्लाइसरॉल डिवाइड हैला ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड रे ताको लाइपोलिसिस कहले व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस से फैटी एसिड रो जेतोले ऑक्सीडेशन हेई की एसिटाइल CoA फॉर्मेशन करूची से प्रोसेस को हमें ग्लाइकोलिसिस कहउचो ओके एटी गोटे जिनस कहूचे कि जदि हमें जानि छै जिनस मते जतोले हमें फैट को जदि हमें हाइड्रोलाइज करिया फैट को हमें जदि डिवाइड करिया सबटु हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलिबो as compared to your carbohydrate and protein okay we got this we know this part हमें ऑलरेडी पढ़ी छै से जिनस विषय that is the first part सरला coming to ketogenesis what is ketogenesis जो एसिटाइल CoA बाहरिला तो एसिटाइल CoA जनरली कोटी यूज वे क्रेब साइकिल रे यूज वे और क्रेब साइकिल रे सेटू एनर्जी बाहर ठीक अछि एटा नॉर्मल प्रोसेस बट जदी एक्सेसिव एसिटाइल CoA हम बॉडी रे आसी गला एक्सेस फैट कंज्यूम करी गले एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल CoA जो बेस प्रोडक्ट बाहरिला तो कोन हबो क्रेब साइकिल हे जिवो ओवरलोडेड क्रेब साइकिल बर्तन सेते एसिटाइल CoA को हैंडल कर पेबो नाही तो rather than producing energy what Krebs cycle will do it will produce the ketone bodies and these ketone bodies it is a stored energy form okay so ketone bodies can serve as the fuel when your source of glucose is too low in your body ketone bodies got adequate amount पर्यंत ठीक but excess hele this is not good for your health so तोला में जो fat related problems आसे body okay and this ketone bodies is going to help you to get energy during your prolonged starvation जेतले बहुत समय पर्यंत भोकरे रहउचे बा डायबिटिक पेशेंट जो माने छन जो मानकर देह रे ग्लूकोज कमी जाउचे सॉरी ग्लूकोज रो मात्रा बढ़ी जाउचे stored glucose or stored glycogens are not there in the body of the you can say patients of the diabetic se manu ko help करे ketone bodies okay this is the second part of utilization third part is the lipogenesis what is lipogenesis देखंतु when the glucose level is plentiful body रे glucose adequate अछि now you see ketone तो glucose कमिले ketone actually ketone bodies use करथाते बर्तन glucose sufficient अछि glucose कमुनी body रे and still you have the ketone bodies then what will happen so it is written over here कि जेतोले when the glucose level is plentiful in your body and you have excess amount of the acetyl CoA excess generate hi jaichi then what will do it can convert into a acetyl CoA पुनी कोन एटा back convert hi परिबो
जो तार ओरिजिनल कंपाउंड्स गुडा को जेमति कि फैटी एसिड्स हला ट्राइग्लाइसराइड्स हला कोलेस्ट्रॉल्स हला स्टेरॉइड्स हला बाइल सॉल्ट्स हला जो ओरिजिनल कंपाउंड जो तो हमें डाइजेस्ट करिया स्टार्ट करले से कंपाउंड रे पुनी रिवर्स कन्वर्शन हबो ओके सेही प्रोसेस को हमें कोन कहू लाइपोजेनेसिस कहू बिकॉज़ देखंतु लिसिस रो अर्थ सब बोले होची भाग करिबा जेनेसिस रो अर्थ होची तयारी करिया लाइपो वर्ड लागिची माने लिपिड कथा कहूची बा फैट कथा कहूची फैट रो भाग होची बा फैट रो एनर्जी बाहर करछु ताको हमें लाइपोलिसिस कहते बट लाइपोजेनेसिस रो अर्थ कोन पुनी होते लिपिड तयारी करछु हमें पुनी फैट तयारी करछु ओके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लाइपोजेनेसिस and it generally takes place in the cytoplasm বা body रो सेल भितर से जिनसरा तयारी हुए got my point ए भितर का डाउट any doubt in this No, sir. ठीक अछि आउ जदि मु एबे बीएमआर पढिबी ओवरफ्लो हो ठीक अछि just whatever we have studied I'll ensure it should मु कथा है आज भी जदि possible ट्राई करे साम को कि माने अति शीघ्र आपन को दिया जाउ ए जिनसटा otherwise if at all the issues are not resolved I'll share this note in the group itself जदि हे पारुनी काली खरावड सुदा but I expect a fair play from you all कि एटा को काइंडली शेयर करिवेनी अन्य माने कहा पाखो को अन्य ग्रुप्स को बिकॉज़ एटा आपन को ही प्रॉब्लमेटिक करी mind my word you will not understand this thing may not understand this thing right now but during your examinations you will find like okay everyone is reading the same thing and you are also reading the same आउ गोटे कथा कहूँ मु I am not telling this is the माने ब्रह्मास्त्र kind of thing but I have done a lot of R&D to got all these notes into the single place okay आपन